free webinar on the basics of stock market, which is in collaboration with HGPA class and Ident Financials. And a very happy new year to everyone. So without wasting any further time, let me get straight to the point. Well, today's webinar is going to be conducting by CA Jeet Mankikar. He's a very dear friend of mine. And to talk about CA Jeet Mankikar, he's a qualified chartered accountant. Well, at a very young age, he started studying with stock markets. He's a co-founder of Irene Financials. They post blogs about stock market, all the situational updates about stock market, and every detailed about the stock market. Just share some tips of how to succeed in the stock markets. A small brief introduction. I was introduced to the stock markets at a very young age. Most notably, it was before the 2008 subprime mortgage crisis, which many of you would know. It was one of the most brutal bear markets in the history. Where the stock markets actually fell by 70-80%. The stocks were battered by 80-90%, and it was just carnage all over the world. So very in financials. I'll come back to that later on at the end of the presentation, but it is basically a blogging website that we have where we come out with situational alerts. We tend to write blogs once a month, preferably when there are special situations out there in the markets. We tend to discuss significant events which one can profit from, what is actually going on in the stock markets. It is a bit different to what you can definitely see on channels like CNBC or Bloomberg. We tend to channel our thoughts very differently on that. So please do follow us over there. I'll be sharing the details at the end of the seminar. So once one enters into the stock markets, or at the first instance, when someone hears that, okay, what is a stock market? There are certain myths that surround the stock markets. The first and foremost is that you need a lot of money to participate in the stock markets. We hear figures of transactions that are being made in thousands of crores, and because of which some people have this pre-notion that to make money in the stock markets, you need to have a lot of money to participate. So first and foremost, let me clear that out at the beginning. If you have basically 1,000, 5,000, 10,000 rupees max, you can definitely participate in the stock markets. This is not something that you need a lot of money for. I will always actually, in fact, encourage that if you have to start in the stock markets, if you have to start gaining experience, it is always good if you start from a very small capital, because when you make mistakes, you will lose money here and there, but the amount won't be significant that it will give you a big setback in your life. So the first myth that I'm trying to bust is that you do not need a lot of money to participate in the stock markets. The second point that I would like to come to is that everyone perceives the stock markets as very risky. It has a risk. Every venture has a risk. When you have to make money, there will always be risk associated, but it is not to an extent that you can't make money in the markets because of which. And the third myth that is widely known, people associate the stock markets as gambling. कि भाई ये जुआ है. It is as if हाथ but is that it is not gambling, friends. This is a profession. This is a line where if you have the right resources, if you have the right research, and when you have studied where you're going to be putting your money into, you can definitely make money in the markets, provided ample amount of efforts are being taken. This is not a get rich scheme कि 21 दिन में पैसा double, the famous dialogue from Hera Fairy. It's not like that. You need to have a certain amount of efforts that you need to put to make money. So these are the basic three myths that I would want to first clear out once again, that you do not need a lot of money to participate in the stock markets. Number two, there are risks that are associated, but it is not as risky as it is perceived. And number three is that it
is not gambling if you do the right research. So let's start with the very, very basic of what is a share. Now, friends, if I have to explain to someone who is absolutely not from the commerce field, so I will say is that we as human beings, we have blood. Our blood is made up of tiny blood cells. Now, consider a share as a blood cell of a human body, as a blood cell of a company. Now, this cell is an intrinsic value. It has an intrinsic value. It is a part of the body. All the cells, all the shares together make the company as a whole, right? So that is why the value of a company, when it is divided by the individual quantities, will give you the value of a share. Friends, if I have to just share something with you, if you even hold one share of a company, be proud of yourself because you are a co-owner of that underlying company. Unlike what people might think that I need to own 50%, 70%. From the commerce background, I'll say yes. From a controlling point of view, it will be, you will have to consider that. But from a layman's term, you are an owner of that company as you have contributed your money, that is your capital, for the workings of that company. So, to reiterate, what is a share? A share is like a small red blood cell that we all humans have. It is a part that all together form the human body, form the company. It has a value that is assigned to it when the company as a whole has a value. When it is divided by the number of quantities of shares, you will get a value of a share. Okay. Now, I'll come to the next topic where now we understand what is a share, but why does a company get itself listed on the stock markets? And why? And how does it get listed? So, friends, you will definitely hear this common term that is out there. You would have come across this terminology called as the IPO. There were recently a few IPOs. The most notable of late was Burger King. Similar to McDonald's, Burger King came out with their IPO very recently. So there was a lot of frenzy on the streets. Everyone wanted to participate. Everyone wanted to become a shareholder of Burger King. And then eventually it got listed. It made a lot of money to those that got the shares. But if I have to come back, if I am an owner of a company, basically in commerce terms, we call it as if I'm the promoter, is a place where people will be then able to trade in it. Now, some people might have a basic question as to why, what are the benefits of a company to get itself listed on a stock exchange? So there are three basic principles that I'll try to cover. There are many, but I'll just try to cover the basics of it, the main ones. Number one reason is that it is a sense of pride. It is a reputation for a company to get itself listed. Friends, the topmost and the biggest companies in any country would want their shares to be listed, right? So if you have the Reliances of the world, the TCSs of the world, the Infosys of the world, all of these companies would want their shares to be publicly traded. And that is why it is a sense of pride for them to get their share listed. The second reason that a company would want to get listed is that it would be to raise funds for its future expansion plans. Now, to explain in layman's terms, if I'm a company and I want to, suppose I'm a company like a DMart, where my basic business is to set up stores and to sell products in those stores. What is the basic model? I have to set up a shop. For that, I will have to purchase the land. I will have to create the infrastructure, and then I will need money to buy the products so that I can sell it out to the public. Now, in this particular case,
establishing one store needs a lot of capital. And if I don't have that capital, I won't be able to expand. I can definitely go to the banks to say, hey, bank, please give me money on loan and I'll take care of it. I will repay it to you back. But instead of going to the banks and getting money charged at a very high interest rate, I can get myself listed and raise funds and use it for further expansion. So that is another way why a company gets itself listed, is to raise funds for expansion. And another point which is commonly seen in the markets is, if I'm a company, I've taken a lot of loans from the banks, I have to repay it. Now, one way is that I take a loan from another bank. Say I had taken a loan from bank A and I now take another loan from bank B to repay off the loan of bank A. That is one way. Or the other way is that I say is that I will sell 10% of my shares out to the public. The funds that I will raise, I will use that to pay off my debts. So that is also another benefit why a company gets listed. Now I'll come to the topic of what is a stock exchange and how does it function. As I said, once a share is coming out through the IPO route, it needs a platform to trade. A stock exchange is nothing but a platform where such listed shares freely get exchanged between buyers and sellers. For the commerce students, if I can say, IPO is basically the primary market where it is the first source of funds to a company trying to get itself listed, and the stock exchange is the secondary market, because once it got listed, now the stock exchange is now a secondary market where it can raise funds or it can sell more shares. So stock exchange is a place where shares are freely traded, known as the secondary market. Individuals like myself, the public as a whole, if they want to participate in buying and selling of shares, they can participate through brokers who are stock exchange members. अगर आप लोगों ने हर्षद मेहता स्कैम जो अभी वेब सीरीज आया था, you will understand that he was a participant and he was a member of the stock exchange, and that is how then he would carry trades on behalf of his clients. उनको बाय करना था, उनको सेल करना था. He was a member of the stock exchange. आप मैं we can become members of the stock exchange, but it is a very costly affair and it has a lot of approvals that are needed and qualifications of that sort. But to reduce all of that, we can definitely hire a broker for that cause, for which we give him certain amount called as brokerage for every transaction, and he will do it on our behalf. He will participate on our behalf. They carry on the activity of buying and selling on the instructions of their clients. Now, if I have to explain, friends, you need to understand that the stock market are a zero-sum game. किसी का loss हुआ तो किसी का gain हुआ. It is always 1:1. If you gain, that means that you have made money through someone else's loss. It is an absolute zero-sum game. There are three major stock exchanges that are widely known in India. The one is the Bombay Stock Exchange. If you see it to the right, the building, which is in South Bombay, you will see it is the oldest stock. It is one of the oldest stock exchanges in India. It came to know as the BSE because of its location. The BSE forms the Sensex. We'll come to what is a Sensex, what is Nifty 50. We'll come to that. But they own the index. They have created the index. It is the Sensex 30. The second most and the biggest stock exchange that we have in India is the National Stock Exchange, the NSE. Yeah. In BKC is their main office, Bandra Kurla complex, and it is one of the most high-tech stock exchanges that we have in India. And the third
index that we have, which many people might not know about, is the multi-commodity exchange, the MSEX. In the MSEX, one can freely trade commodities like oil, gold, silver, copper. You can freely trade. You just don't need to trade stocks, equities. You can also trade commodities over there. So that is a platform, multi-commodity exchange, where you can trade commodity. For the equity markets, the basic timings of the stock markets are 9:15 to 3:30, where you can freely trade. I won't cover. There is a certain session prior to 9:15 called as the pre-market session, and where there is a free exchange of shares. It is commonly done to reduce the volatility that earlier the participants would earlier face, where 9:15 को market एकदम खुल गया कि you would see wide fluctuations in the prices. So to stop that, the exchanges started introducing a pre-market session between 9 to 9:15. It gets a bit complicated, so I'll not try to cover that. But to freely understand, you can, if you are a participant in the market, you can freely trade your shares between 9:15 a.m. to 3:30 p.m. Yep. Now I'll come to the something that you guys must have heard very commonly. Sensex आज बढ़ गया. Nifty is making all time highs. भाई ये Sensex होता क्या है? What is a Nifty? So to come to the most basic of basic levels, it is an index. Now, what is an index? An index is a group of shares that are collaborated into, a group, if I have to say. Now, different groups are given different names. Now, in this particular case, what is Sensex? The full form of Sensex is the sensitivity index. It was coined by a person from Pune named Mr. Deepak Mohani. Back in the days, he came up with the name that, to understand the sensitivity of different shares, he came out with the name as the sensitivity index, and then that is how the term Sensex was coined. Now, if I have to say, this index that is commonly known as the Sensex, it comprises of the largest 30 companies in India. These 30 companies are the companies that we come across on a day-to-day basis. And these are the companies that, friends, if I have to just share, basically form the economy of India. Now, all of these shares are listed. उन सब shares को एक ऐसे group में बना दिया जिससे Sensex बन गया. Similarly, the Nifty 50 comprises of the top 50 companies in India. It will definitely constitute 30 companies of the Sensex and 20 more. Because as India is growing as a nation, it will definitely have more and more bigger companies that will emerge. And so when one looks at the Sensex or one looks at the Nifty, one can say that it is an indication. It is an indication of the state of the economy. You can say that. Can I say that it is absolutely true? We'll discuss that later on. But in a nutshell, to understand, I will say is that the Sensex and the Nifty comprise of the top 30 and the top 50 companies of India. And it is an index. It is a number that is assigned. Now, the constituents change from time to time. आपने कुछ एक कंपनी का नाम सुना होगा, सुजलॉन नाम की एक कंपनी थी. Back in the days between 2000 to 2010 sort of a period, Suzlon was a company that was, it was one of the largest companies in India. Unfortunately, it went through a lot of struggles. There was a lot of debt, and now they are suffering, and because of which उनकी share value कम हो गई और उनको Nifty और Sensex से हटा दिया गया, and it was replaced by another company as such. So the constituents keep on changing. That is a whole together different topic of discussion. So
I'll not touch upon it, but just to share with you, friends, the constituents keep on changing. The movement of an index is a reflection of the overall general movement of its constituents. The components have weights that are assigned to them by the stock exchanges, which keep changing from time to time, and their individual movements multiplied by their weights leads to a movement in the index. So if I have to just share with you guys that आप अगर नीचे अभी देख रहे हो, there will be a table. This table is the top 10 companies that come under the Nifty 50. If you see, there are certain weights that are assigned to each of these companies. So right now, the highest weight is Reliance Industries, which has a weight in the Nifty 50 of 10.66%. So if Reliance का शेयर 1% से ऊपर हुआ तो निफ्टी 10 पॉइंट से बढ़ेगा in layman's terms. So similarly, HDFC Bank, Infosys, these names you will come across on a day-to-day basis. These are very, very huge corporations, and that is how they form. So this is what a Nifty is in a nutshell, and this is what a Sensex is. It is an index that comprises of different stocks, most likely the biggest companies in the country, and all together form. They are assigned weights, and one can look at it from a point of view as to how the Indian economy is doing to some extent. Now I'll come to another interesting topic, that is what is a share certificate, and जो एक common term अपन जो हमेशा सुनते रहते हैं is that demat account खोलना है, वो करना है, वो होता क्या है? What is it? So friends, I explained to you. I explained to you what is a share. So let me come back to the point that in the pre-electronic era, 1990s में होता था, 1980s में होता था, उस जमाने में shares were acknowledged by a company by issuing a share certificate. This is an example of a share certificate back in the day. उस वक्त Reliance Energy नाम था. तो this is a share certificate. ये जो share certificate जो होता था, this would be an acknowledgement by the company as to that the one that owns that share certificate is the owner of that particular is the owner of the shares of that company. So उस जमाने में this share certificate would be an evidence as to say that, hey boss, I am a shareholder of this particular company. It would have the quantities that are mentioned. If you see over here, 24 shares that are being held. And if you can see, the date is very old, 27 January 2006. This was at a time when the demat era was emerging, but it was still paperly traded at that point of time. Not in 2006, I'm going back in the 1990s. So if you had a share certificate, you would be a shareholder. And understand, friends, if you are a shareholder, you would want to at some point of time gain from it, and you would want to trade it, but it would be very difficult to exchange your paper and give it to someone. So उसकी वजह से बहुत problems होते थे उस जमाने में. Then the electronic era emerged, and when that emerged, that led to a new form being introduced, commonly known as the dematerialized form. So उसका ही नाम का छोटा version is demat. That did away with this paper certificates that you have. You no longer needed a paper certificate to justify that you are a shareholder. All of these certificates got converted electronically, and once they got converted electronically, you needed to have a demat account. So basically, a demat account is nothing but a common place where all your shares you can find in one place. Okay, I hope I was able to explain it. Today, friends, back in 2016-17, if I'm correct, all I guess 2018. Now today, in today's era, all shares are dematerialized. There will be no shares that are listed on the stock exchange जहाँ पे one will be a shareholder through their share certificate. As a tip, friends,
अगर आपके grandparents or if your parents own still shares in the share certificate format, I will recommend that you go to Curvy Broking and get those shares converted from a shared certificate to a demat form. So of course you will have to create a demat account with brokerage firms. Commonly, if I have to just take a few names like HDFC Securities, ICICI Securities, or Angel Broking, these are depository participants. These are stock members in the stock exchanges, as I earlier covered. They will help you to then convert. I mean, Curvy will be able to help you convert your paper shares into dematerialized form. So this was a basic difference between what is a share certificate and ye demat kya ho gaya. So now we are now about to end the session over here. I will again acknowledge the fact that friends, this link we will now take a break of 10 minutes. Please join back on the same link once we end this session. We can take a break of 10 minutes and then I'll start covering and start giving you the more practical approaches of the markets. I'm pretty sure the second part of the session will be much more interesting. I tried to create a base to where we are right now. What is the difference between share certificate and demat? Now I will now show you guys how a demat account looks like. So now let's start coming to the practical aspects जो जिससे आपकी मतलब वो inquisitiveness और बढ़ेगी कि क्या होता है. So now I'll just share my screen and please confirm once you can see. Excuse me, sir. Yes. Excuse me, sir. Sir, please do re-explain the last point, na? Which point? Share certificate Sir, and last point. demat? Yes, sir. Last point. Okay. I'll quickly go through it once again. So to make you guys understand, in the pre-electronic era, जब technology इतनी advanced नहीं थी, at that point of time, if you had to be acknowledged as a shareholder, you needed to have a share certificate, जो ऐसा दिखता है. ये जो share certificate होता था, this would be an acknowledgement from the company to say that the holder of the share certificate is a shareholder. जहाँ पे the quantity of the shares that are being held will be mentioned over there, and this would be a paper which will enable you to exchange your share later on at a given point of time for money in return. So शुरुआत में जब कंपनी ने IPO के टाइम पे मतलब वो शेयर्स बेचने को आए थे मार्केट में, तब उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने पैसा लिया इन्वेस्टर से और उनको शेयर्स दिया. बट उस जमाने में शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता था. आज के जमाने में ओके, आज का छोड़ो. नाउ वंस यू वांट टू रिडीम द शेयर, उससे मतलब उसको बेच के फिर से पैसा चाहिए हो, तो देन दिस शेयर सर्टिफिकेट यू विल गिव बैक टू अ ब्रोकर and he will then give you money. वैसा है. So उस जमाने में ये शेयर सर्टिफिकेट होता था. In today's age, this has now moved all from a paper-based format to an electronic format. The process of this being converted is called as dematerialization. उसको dematerialize किया, जिससे वो नाम आया demat. So a demat account, जो मैं अभी दिखाऊंगा, is a place where all your shares in a dematerialized form, तुम्हारी जो भी holdings हो, वो वहां पे आपको दिखेगी. I hope I've been able to explain it. Yes. Okay. So now I will show you guys how a demat account looks like. So this is how a demat account. First and foremost, can you guys see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. This is a demat account. This is how it will appear on your screen. जब आप आपके demat account में आओगे, तब आपको ये सब दिखेगा. So ये जो मैं आपको screen के सामने आपको दिखा रहा हूँ, this is Sensex. So as I said, what is Sensex? Please mute your voice. तेरे को मारा नहीं मैं अभी तक, समझ में आया तेरे को? तेरा दिमाग घूम के ना रोड पे चले जाएंगे तो भाग जाएंगे. There's someone named Pooja on the group. Okay, I'll just.
Okay. Jeet, yes, you're good to go. Sure. So now in this particular scenario, I had explained कि Sensex क्या होता है. It is an index. वो index में top 30 shares रहेंगे. उन सबको मिला के एक यूनिटरी फिगर आ जाता है जो Sensex की वैल्यू है. यहाँ पे आपको दिखेगा. उसकी कल शाम को when the markets closed, उसकी what was its value? It was 48,782. Now don't go by the figure. It looks huge, but it is nothing but a representation over a period of time. जब सेंसेक्स क्रिएट हुआ था तब से आज तक उसका मूवमेंट न्यूमेरिक टर्म्स में कितना हुआ है वो बता रहा है. दैट डज नॉट मीन कि उससे आप पैसा कमा सकते हो. इट इज एन इंडिकेशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. दैट इज द बेस्ट वे दैट आई कैन एक्सप्लेन इट. दूसरा जो मैंने आपको बोला था वो जो निफ्टी था वो निफ्टी है. उसकी वैल्यू है 14,347. आप पूछोगे सर सेंसेक्स की वैल्यू 48,000 क्यों, निफ्टी की वैल्यू 14,000 क्यों, इतना डिफरेंस क्यों है? There is a reason behind it. The reason is that the Sensex was formed at a very earlier stage, जहां से it had more years to increase. Nifty, I mean the National Stock Exchange, it was established in 1996 and तब उन्होंने Nifty 50 बनाया. तब से वो ट्रेड होना चालू हुआ जिसकी वजह से it had lesser years to grow. So it's just like it had more years being existent and it was able to grow. इसलिए Sensex की वैल्यू ज्यादा है और निफ्टी की वैल्यू कम है. But does it de-signify its importance? No, friends. I will always say that the Nifty 50 will give you a better representation of the economy and a better representation of share market में क्या चालू है rather than Sensex, because the Nifty 50 has more components. I will not go deeper into it, but you will then find many other indexes. Like एक बहुत famous index है, उसका नाम है Bank Nifty. This Bank Nifty is an index similar to Sensex and Nifty 50 that comprises of all the banks that are listed in India. जिसमें आपको private sector banks भी दिखेंगे, public sector banks like SBI, Bank of Baroda, Allahabad Bank, all of these listed public sector banks आपको वहां पे दिख जाएगी. And उन सबको मिला के एक बैंक निफ्टी का भी इंडेक्स बनता है. If I show you बैंक निफ्टी तो आप बोलोगे सर इसका तो वैल्यू निफ्टी से भी ज्यादा है. So you need to understand again, it is at 32,163. But friends, I just need to make you guys understand that don't go by the figure of an index. It is just a representational value. To you guys in the most basic of basic form, ये line chart जो I believe सबको समझ में आएगा कि ये line chart क्या बताता है. ये line chart बताता है अपने को is that day on day उसका movement क्या होते गया. So यहाँ पे आपको वैल्यू दिखेगी 40,800. Y एक्सिस पे राइट हैंड साइड को आपको वो फिगर दिख रही होगी 40,800. देन आज की वैल्यू 48,000 नीचे आया था. सो इट विल शो यू लाइन बाय लाइन मूवमेंट जो फ्लक्चुएशन जो चलते रहते हैं. आपको ये दिखेगा अगर आपने पेपर में पढ़ा होगा या इफ यू आर अवेयर दैट फरवरी में अपने इधर कोरोना क्रैश हुआ था. द वर्ल्ड मार्केट्स क्रैश्ड लाइक एनीथिंग. 2008 के बाद इतना बड़ा क्रैश कभी आया है वो अभी आया था सॉरी. एंड वहां पे इफ यू सी सडन ड्रॉप उस वक्त सेंसेक्स इतना था 41,600 एंड देन इट क्रैश टू अ लो ऑफ 26,000. आप समझ रहे हो 42,000 41,000 and 26,000. that was a correction on the index of 50% almost. अगर इंडेक्स 50% से गिरा है तो उसके कंपोनेंट्स कितने परसेंट से गिरे होंगे? somewhere in the average of 30% to 70% on an. तो उनका एवरेज मिला के इंडेक्स गिरा है. To explain, तो मैं यही बोल रहा हूँ is that if you have done your research well, if you have entered the markets for the longer term, आप पैसा बना सकते हो. बट अगर आप ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में घुसोगे आपका पैसा नहीं बनेगा, आपको लॉसेस होंगे. We'll come to the point later on because if you see Sensex वहां से गिरने के बाद 26,000 से डे ऑन डे बढ़ते बढ़ते अभी 48,000 हुआ है. So if I have to say यहाँ पे जिसने भी खरीदा होगा 26,000 पे, he is right now sitting on almost profits of 70 to 80% on an average. एक साल के अंदर मार्च में ये हुआ था. right now we are in the month of January. but we'll come back to ये मैं बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ. प्लीज डोंट बिलीव कि बस ऐसा ही होता है. there are a lot of complications. जैसे हर प्रोफेशन में
टॉपिक स्टार्ट गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड. आज का बेसिस यही था ये सेमिनार का, टू एक्सप्लेन टू यू ये जो बेसिक्स क्या होता है ऑल. सो ये डीमैट होता है. ये डीमैट में आपको निफ्टी, सेंसेक्स दिखाई देगा. अभी ये एचडीएफसी बैंक. नाउ लेट अस कम टू अ स्टॉक. एचडीएफसी बैंक आपको सबको पता होगा, दिस इज द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया. इट इज द मोस्ट रेप्यूटेड बैंक ऑफ इंडिया टू सम सर्टेन एक्सटेंट. उसकी शेयर वैल्यू क्या है? 1431 रुपीस. तो उसका मूवमेंट क्या था? ये पूरा लाइन चार्ट आपको दिखा रहा है डेली पे, कि हर दिन पे इसका मूवमेंट क्या था. इफ आई हैव टू से, देखो फ्राइडे को इट क्लोज्ड एट 1431, उसके एक दिन पहले इट वाज एट 1415. तो उसका अप्रिसिएशन एक दिन में कितना हुआ क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस? तो ये बता रहा है 1.09%. ग्रीन में है तो दैट मींस कि वो बढ़ा है शेयर कंपेयर टू इट्स प्रीवियस डे. एंड देन अगर मैं एसबीआई दिखाऊंगा, व्हिच इज द नंबर 1 पब्लिक सेक्टर बैंक ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसकी शेयर की वैल्यू है 286 रुपीस. तो उसकी वैल्यू अगर आप देखोगे, इट फेल बाय 0.6%. तो थर्सडे को इसकी वैल्यू कितनी थी? इसकी वैल्यू थी 287. एंड देन फ्राइडे को उसका क्लोजिंग क्या हुआ था? 286. सो दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ स्टॉक्स, इंडेक्सेस, जो भी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंजेस पे, आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा. सो अगर आपको अभी कभी शेयर बाय करना हो तो थोड़ा आपको प्रैक्टिकल, अभी मार्केट्स आर नॉट ओपन, सो आई वोंट बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ इट इज एग्जीक्यूटेड, बट आई कैन शो यू कि अगर आपको बाय करना हो तो आपको क्या करना होगा. सो इसको बोलते हैं फॉर सीए इंटर स्टूडेंट्स, उनको पता चलेगा, और मे बी इन योर सीए फाइनल्स यू विल कम अक्रॉस, ये ऑर्डर बुक नाम की एक कंसेप्ट होती है. ये जो ऑर्डर बुक होता है, यहाँ पे आपको टॉप 5 बायर्स और टॉप 5 सेलर्स दिखेंगे. अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ एज द मार्केट्स आर क्लोज्ड, आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा. इफ आई हैव टू बाय अ शेयर, आई विल मेक अ बिड. मैं बिड करूंगा, तो मेरी ऑर्डर यहाँ पे दिखेगा कि ठीक है, Jeet Mankikar wants to buy XX quantities of HDFC Bank at this particular rate. तो ये जो बिड का कॉलम है, यहाँ पे मैं जो रेट पे बाय करना चाह रहा हूँ वो दिखेगा. यहाँ पे ऐसे कितने ऑर्डर्स है वो प्राइस पे वो दिखाई देगा. एंड व्हाट इज द क्वांटिटी दैट आई एम विलिंग टू बाय? 10 शेयर, 1 शेयर, तो उतना अमाउंट मेरे को देना पड़ेगा. तो दैट इज व्हाई आई एम पुटिंग अप अ बिड. अभी सेकेंड एंड पे कोई एक सेलर होगा जिसको बेचना है, वो देखेगा, हे बॉस, इसको ये रेट में बेचना है एंड मेरे पास शेयर्स है, एंड मुझे मेरे शेयर्स अभी कन्वर्ट करके पैसा चाहिए. जो मैंने लगाया था वो मैंने कमाया, मुझे चाहिए मेरे पैसे. तो देन ही विल अग्री, वो यहाँ पे उसकी ऑफर डालेगा. तो सपोज आज एचडीएफसी बैंक का वैल्यू है 1431, तो मैं वैल्यू डालूंगा 1430 पे 10 शेयर्स बाय, 14,630 रुपए का मैंने वैल्यू डाल दिया. वो बोलेगा नहीं, आई विल वांट टू सेल इट एट 1435 पर शेयर. तो देन ही विल पुट सेल, he will offer his shares 10 quantity at the rate 1435 for इतनी क्वांटिटी पे मैं 1435 पे मैं मेरे शेयर्स बेच रहा हूँ. तो दिस बुक, ऑर्डर बुक, आपको बताएगा कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम बायर्स और सेलर्स कहाँ पे है, और इसके बीच में भी ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं. तो आप जब ट्रांजैक्ट करोगे तब उसका वॉल्यूम एक जनरेट होगा. सो सपोज हर्ष है ऑन द अदर एंड, ही ओन्स 10 शेयर्स ऑफ रिलायंस, मुझे चाहिए थे 10 शेयर्स, तो मैंने ऑर्डर डाला, उसने बेचा, तो वो जो 10 शेयर्स जो ट्रेड हो गए वो आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिखाई देगा, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. सो व्हेन यू सी व्हाट इज अ वॉल्यूम ऑन अ गिवन डे, इट इज द नंबर ऑफ शेयर्स दैट आर बीइंग एक्सचेंज्ड फॉर दैट पर्टिकुलर डे. तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम्स करोड़ में दिखेंगे, लैक्स में दिखेंगे. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इतने शेयर्स ट्रांजैक्ट होते रहते हैं. एचडीएफसी बैंक जैसे शेयर्स की वैल्यू फ्रेंड्स ऑन अ गिवन डे एक्सचेंज होती है टू द ट्यून ऑफ 500 करोड़ टू ऑलमोस्ट 3-4,000 करोड़. यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये स्टॉक मार्केट से यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग भी आते हैं और छोटे छोटे भी लोग आते हैं. बट दैट डज नॉट मीन अपन छोटे लोग ऑर्डर दे नहीं सकते. अगर उनका छोटे लोग, इन व्हेन आई एम कंपेयरिंग इट, इज आई एम टॉकिंग अबाउट द साइज ऑफ देयर पॉकेट्स, द साइज ऑफ देयर मनी. तो आपको ये यहाँ पे वॉल्यूम दिखाई देगा वंस द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड. फिर ये होता है ओपन वैल्यू, कि आज 9:15 बजे 9:15 को, as I said, the markets will open. What was the value?
जब खुला मार्केट तो आपको यहाँ पे दिखेगा प्राइस, तो फ्राइडे को व्हेन द प्राइस ओपन, इट ओपनड एट 1432, राइट। देन उसके बाद फ्राइडे के दिन व्हाट वाज द हाईएस्ट पॉइंट, तो 1442 हुआ था। व्हाट वाज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे, 1423, एंड देन वेयर डिड इट क्लोज, इट क्लोज्ड एट 1416, दैट इज वेयर इट क्लोज्ड। सो ये ऐसे करके अगर मैं ऐसा बाय ऑर्डर डालूंगा तो ये फिर एक you will see at the bottom कि now I make a regular order कि 10 shares at the rate I will say 1435 मुझे लेना है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, वो बता रहा है कि मुझे कितने पैसे लगेंगे और मैं यहाँ पे बाय ऑर्डर डाल दूंगा। इट वोंट एक्सेप्टेड बिकॉज मार्केट्स आर क्लोज्ड, तो यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा मार्केट्स आर क्लोज्ड राइट नाउ फॉर प्लेसिंग ऑर्डर। प्लीज तुम आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स भी डाल सकते हो, इसको AMO बोलते हैं, या फिर जब मार्केट चालू हो तो आप ये डाल सकते हो। सिमिलरली अगर मुझे सेल करना होगा, मेरे पास शेयर्स हो तो मैं सेल दबाऊंगा, यहाँ पे क्वांटिटी डालूंगा, यहाँ पे प्राइस डाल दूंगा एंड सेल बटन दबा दूंगा, तो इट विल गो टू द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज अब क्या करेगा, स्टॉक एक्सचेंज देखेगा यहाँ से ऑर्डर आई है, यहाँ से ऑर्डर आई है, आर दे मैचिंग एट द सेम पॉइंट, हो रही है एक्सचेंज, वो फैसिलिटेट कर देगा और एक को पैसे आ जाएंगे, एक को शेयर्स आ जाएंगे, एंड दैट इज हाउ अ ट्रांजैक्शन विल बी कंप्लीटेड। अभी लास्ट पार्ट ऑफ डीमैट अकाउंट का अभी बेसिक पे कि मैंने बोला था कि वो डीमटेरियलाइज फॉर्म हो जाएगा, तो डीमटेरियलाइज फॉर्म में आने के बाद आपके डीमैट अकाउंट में कैसा दिखता है, इट विल लुक लाइक दिस। ये आपके होल्डिंग्स दिखेंगे आपको कि आपके पास कितने कंपनीज है। तो अभी जैसे मैंने आपको डीमार्ट बोला, तो डीमार्ट की वैल्यू है 7 क्वांटिटीज है, उसकी बाइंग प्राइस क्या थी 1715, 1715 रुपए को तब बाय किया था। LTP क्या होता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, उसकी प्राइस आज क्या हो रही है ट्रेड 2967, उसकी अब वैल्यू कितनी हुई है 20,772, और उसके ऊपर आज नोशनल गेन कितना है दोस्तों। आज अगर मैं मार्केट में गया तो ये पूरे ट्रांजैक्शन के बाद मैंने कितना कमाया वो यहाँ पे दिखेगा आपको P&L, यहाँ पे लॉस भी है तो यहाँ पे गेन भी है, एंड परसेंटेज टर्म्स मैंने कितना कमाया। अगर मैं 1 लाख लगाता, अगर मैं 10 लाख लगाता, अगर मैं 1 करोड़ लगाता, तो फ्रेंड्स हमेशा मार्केट में इफ यू हैव टू अप्रोच, प्लीज अप्रोच विथ परसेंटेज, कितना कमाना है, कितना अमाउंट नहीं कमाना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, तुमने 2% कमाया 100 रुपए के ऊपर या 1 लाख के ऊपर, उतना ही होगा, जस्ट अमाउंट टर्म्स में इट विल बी डिफरेंट, बट इन द स्टॉक मार्केट यू हैव टू अंडरस्टैंड तुमने परसेंटेज टर्म्स में कितना कमाया है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो ये परसेंटेज दिखा रहा है, और डे चेंज में कितना था ये इधर ये दिखा देगा कि डेली चेंज पे कितना था। अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स, तो दिस इज हाउ अ डीमैट अकाउंट, ये क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया है। नाउ लेट मी कम बैक टू आवर प्रेजेंटेशन एंड नाउ लेट्स स्टार्ट टेकिंग अप थिंग्स मच मोर अ लिटिल बिट फास्टर। नाउ फ्रेंड्स, मैंने आपको डीमैट अकाउंट दिखा दिया है। हाउ डू यू थिंक कि मार्केट्स में पार्टिसिपेंट्स कैसे होंगे? मार्केट्स में पार्टिसिपेंट्स, देयर आर वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन अ मार्केट। एक होते हैं फंडामेंटल एनालिस्ट और एक होते हैं टेक्निकल एनालिस्ट। I will come to the technical aspect because that is what I am basically, but fundamental कैसे होते हैं? Now जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स है उनको पता है कि एक कंपनी उसके रिजल्ट पब्लिश करती है। So once they एक और चीज दोस्तों, if you get listed on a stock exchange, there is a SEBI rule, the Securities Exchange Board of India mandates that every listed company on a minimum has to declare the results every quarter. A quarter comprises of 3 months, so साल में 12 महीने होते हैं तो 4 क्वार्टर होते हैं। Every quarter they'll come out with their results, जहाँ पे they will come and show to their shareholders कि बॉस in the given 3 months हमने कितना कमाया, हमारा कितना लॉस हुआ, हमने कितना हमारे गुड्स बेचे, and फलान ढिकान, there are a lot of things that are involved in it. So for a commerce student they will understand कि आपको बैलेंस शीट दिखेगी, आपको उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखेगा, एंड पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिख जाएगा कि उनका परफॉर्मेंस क्या था। It will be certified by a chartered accountant as to its authenticity, कि the numbers are fair and correct. Those that are studying audit, they will understand this point. And ये उन्होंने पब्लिश करने के बाद as a shareholder जो फंडामेंटल लोग होते हैं, then they'll study the company. They'll study कि okay 3 महीने में कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया,
was it able to deliver on to its expectations, and if not, ये क्या करने वाले. You will find many comments on that कि कंपनी अभी एक्सपांशन के लिए जाने वाली है, वो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं, उन्होंने एक क्वार्टर में ये लॉन्च किया था. जैसे अभी HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अ वेरी वेरी बिग कंपनी इन इंडिया. आपको पता नहीं होगा फ्रेंड्स, आपके घर में आपके 10 प्रोडक्ट्स अगर आप यूज कर रहे होंगे, 8 प्रोडक्ट्स आर HUL के प्रोडक्ट्स. आप जो भी बोलो, लाइफ बॉय बोलो, एक्स डिओडोरेंट बोलो, आप कॉर्नेटो आइसक्रीम बोलो, आप जो भी मेजरली यूज करते हो, आप मेजरली आप HUL के ही प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे होंगे. बट वो नए जब प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है मार्केट में, तो वो प्रेजेंट करेगा कि हमने ये प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और अगले क्वार्टर में हम लोग और 2-3 प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले. सो बेसिकली व्हेन आई एम अ शेयर होल्डर, आई हैव गिवन माय मनी टू द प्रोमोटर्स. मैं बोलूंगा कि बॉस, मैंने इनडायरेक्टली तुमको पैसा दिया, एक्चुअली डायरेक्टली पैसा दिया मैंने. नाउ you need to keep telling me why it is important that I keep my money with you. How will I earn? In the markets, you will only earn through certain aspects, that is capital appreciation. For non-commerce people, capital appreciation मतलब शेयर की वैल्यू बढ़ना. 100 को लिया, वो 110 रुपए का हो जाएगा, तो 10 रुपए आपका कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ. दैट इज वन वे. एंड द अदर वे इज डिविडेंड्स. ये डिविडेंड नाम का कंसेप्ट फॉर आवर नॉन कॉमर्स फ्रेंड्स, अगर मैं समझा सकूं, इज दैट अ कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है, इट wants to distribute the profits, a part of its profits. अगर उसने 1000 करोड़ कमाए एक क्वार्टर में, तो बोलेगा कि मैं 200 करोड़ मेरे शेयर होल्डर्स को एज लॉयल्टी, दैट उन्होंने मुझे पैसा दिया था, आई नीड टू गिव रिटर्न टू देम. तो वो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं और वो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देते हैं. तो इन दिस केस अ फंडामेंटल एनालिस्ट वो क्या करेगा, ही विल फोकस ऑन द क्वांटिटेटिव मेजर्स driving a company, namely उसका profit, revenues, expenses, mainly its financial performance. They will also focus on the qualitative parameters कि भाई future में expansion plans क्या है, product launches क्या होने वाले हैं, future potential corporate actions, कि company बोलेगी कि अगर हमको expand करना है, हम लोग ये company को खरीद लेंगे. तो that is also states, it is a statement of intent कि भाई ये company grow करने वाली है. They have high intentions कि भाई इनको बहुत profitable बनना है, बहुत बड़ा बनना है. तो you would want to be a shareholder of that company. क्यों? क्योंकि उसकी फिर शेयर वैल्यू और बढ़ेगी, लोगों को लगेगा ये शेयर लेना चाहिए, and automatically the prices will then start increasing. ये एक फंडामेंटल एनालिस्ट हुआ. द सेकंड एस्पेक्ट होते हैं टेक्निकल पार्टिसिपेंट्स. ये टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं. ये टेक्निकल एनालिस्ट क्या होते हैं, इज दैट वो चार्ट देखते हैं. जो मैंने आपको अभी डीमैट में दिखाया, वो चार्ट देखते हैं. वो चार्ट देखने के बाद वो क्या करते हैं, चार्ट पे एक सर्टन पैटर्न्स बनते हैं, जो मैं आपको अभी तुरंत दिखा देता हूँ क्विकली, so that आपको समझ में आने लगेगा कि क्या होता है. So what I'm right now showing in front of you friends is a chart of HDFC Bank again. तो इसके पैटर्न्स होते हैं. तो मैं इसके ऊपर ड्रॉ करूंगा कुछ लाइंस. इफ आई हैव टू शो, चलो निफ्टी का मैं, दिस इज अनदर, इफ आई हैव टू शो, ये निफ्टी का चार्ट था. तो मैं क्या करूंगा, इफ आई एम अ टेक्निकल एनालिस्ट, मैं यहाँ पे आई विल ड्रॉ, हम इसको ट्रेंड लाइंस बोलते हैं. आई विल नॉट टच अपॉन सच थिंग्स right now because it is I have to deep dive into it, but I will draw such lines. और मैं ये लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या होगा कि जब ये प्राइस यहाँ से बढ़ेगा, तब मैं इसको बाय करूंगा विद एंटिसिपेशन कि भाई ये बढ़ने वाला है. आप पूछोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है. इट इज अ फॉर्म ऑफ एनालिसिस. इसको हम लोग प्राइस के एंगल से देखते हैं एंड इससे हम डिसीजंस लेते हैं कि अगर यहाँ से प्राइस बढ़ा है तो यहाँ से प्रोबेबली ये और बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पे शेयर्स ले लो. सो एज अ टेक्निकल एनालिस्ट आई विल नॉट लुक एट द फिगर्स कि भाई कंपनी क्या करती है, मुझे नहीं पड़ी है, कंपनी क्या आगे करने वाली है, आई डोंट केयर अबाउट इट. आई एम मोर फोकस्ड ऑन उसकी प्राइस के मूवमेंट्स एंड उसके अगर पैटर्न बन गया तो वो पैटर्न के हिसाब से आई विल एंटिसिपेट कि ये बढ़ने वाला है, तो आई विल टेक पोजीशंस. सो इन शॉर्ट ऐसा टेक्निकल साइड पे होता है. ओके, नाउ
we're coming to the end of it, and then we'll take a quick Q&A on this. Is that how can one participate in the stock markets? And सबसे बड़ा question, why should one participate in the stock markets? क्यों आपको आपके पैसे लगाने चाहिए? Why should one consider the stock markets as a whole? So first, let me come to the point that how can one participate? तो one can participate directly, जो मैंने आपको डीमैट अकाउंट दिखाया, आप खुद शेयर्स ले सकते हो, और द अदर वे इज थ्रू म्यूचुअल फंड्स. ये म्यूचुअल फंड एक कंसेप्ट होता है. ये म्यूचुअल फंड क्या करता है? ये म्यूचुअल फंड सब लोगों से पैसा कंपनी की तरह लेता है, और वो पैसा देन इन्वेस्ट करता है इन द स्टॉक मार्केट्स इनटू डिफरेंट शेयर्स. सो इंस्टेड ऑफ यू डूइंग दैट मैनुअल वर्क, he will do that manual work. They will have a lot of expertise in that. They will be fundamental analysts, they will be technical analysts. ये लोग अपने रिसर्च से कंपनी ढूंढेंगे कि भाई पैसा कहाँ पे लगाए जिससे अपना पैसा बढ़े. एंड हम लोग हमारे यूनिट होल्डर्स, इनको बोलते हैं, यहाँ पे शेयर होल्डर्स नहीं होते. इफ यू बाय अ म्यूचुअल फंड, आप यूनिट होल्डर बनते हो, आप शेयर होल्डर नहीं बनते हो. इट इज वेरी सिमिलर टू अ शेयर होल्डर, बट यहाँ पे आप एक पूल ऑफ फंड्स को पैसे दे रहे हो. एक पूल होता है जहाँ पे आपके सब फंड्स आते हैं, 100,000 लोगों के फंड्स आ जाते हैं, एंड देन ये जो फंड मैनेजर जो होता है, ही देन डिसाइड कि इसको यहाँ पे डिप्लॉय करना है. मुझे टाटा मोटर्स लेना चाहिए, या मुझे एचडीएफसी बैंक लेना चाहिए, या मुझे इन्फोसिस लेना चाहिए, एंड देन उसके शेयर अप्रिशिएशन के हिसाब से वो ट्रेडिंग करेगा, इन्वेस्टिंग करेगा, एंड देन वो प्रॉफिट लेके आएगा, एंड देन ही विल डिस्ट्रीब्यूट. ही विल टेक अ मैनेजमेंट फीस फॉर दैट. उसका थोड़ा प्रॉफिट वो ले लेगा, बाकी he will distribute to all their holders. So there are two basic ways how one can participate in the stock markets. One is directly, आप शेयर्स खरीद सकते हो, आपके लिए उसके लिए you will have to have a demat account, or the other way is through mutual funds. The most basic reason why one I'm coming to the point, why should one participate, is that the most basic reason why one should participate is to generate wealth, friends, in the long run. हम सबको पैसा कमाना है. नौकरी मतलब you can either earn through working, either through business. What is the basic aim is to grow your money. आप कैसे ग्रो कर सकते हो? आप एफडीज में लगा सकते हो, या आप फिर स्टॉक मार्केट्स में भी लगा सकते हो, जहां पे you can create wealth over a period of time. So if you want to make money, I will say stock markets is a good avenue to make money, provided, friends, I'll again repeat, you need to have a lot of research, and you need to spend the time so that you will get the rewards from the markets. Basically, in a nutshell, you let the promoters, in short the owners of a company, make money for you. क्या करते हो आप? आपके पैसे देते हो किसी को, एक प्रमोटर को, कि भाई ये ले पैसे, तू मुझे शेयर्स दे दे. अब वो पैसे का तुझे क्या करना है, तू कर ले. He will use it into his company and expand it, and at the same time तुम्हारी शेयर वैल्यू बढ़ेगी. आपको कुछ नहीं करना है, you will just be a shareholder. So it can be a form of passive income as well if you know invest correctly. Another important point why one should participate in the stock markets is because अगर आप देखोगे आज इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम है. आज एफडी का रेट आपको 4.5 to 4.8% मिल रहा है. एंड फॉर आवर नॉन कॉमर्स फ्रेंड्स, महंगाई जो होती है, इन्फ्लेशन व्हाट वी कॉल, आपका इन्फ्लेशन आप जितना कमा रहे हो वो ईट अप कर देता है. इट इज अ टेक्निकल एस्पेक्ट, बट टू से इट इन अ नटशेल, आप जितना कमा रहे हो आप उतना ही आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, एंड एट द एंड आपकी वेल्थ नहीं ग्रो हो रही है. सो दैट इज व्हाई I will say that you need to earn more than an FD, and that is possible by participating in the stock markets as a whole. With experience and proper techniques, one can generate a lot of money in the medium to long term, over 5, 10, 15 years. That is why one should participate. It is a definite option for retirement planning, friends. आप जितने young age में आप ये चालू कर सकते हो. आप एक्सपीरियंस पहले आप बहुत धक्के खाओगे, ये करोगे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ यू इन्वेस्ट इनटू द राइट कंपनीज यू विल बी एबल टू अर्न गुड मनी. द अर्लियर यू बिगिन, द ग्रेटर पोटेंशियल दैट यू कैन हैव, एंड इट कैन लीड वन टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. सो we'll come to question answers immediately. I'll just give some tips before I'll take your question and answers. These are very, very important points, friends. Please remember that when you're starting off. Focus on blue chip stocks for investment purposes. ये blue chip stocks क्या होते हैं? The top
companies of India like a Reliance or an HUL, like an Infosys, TCS, ये companies को आप उसमें invest करो, ये आपको over a period of time most likely they will help you to earn money. Focus on the power of compounding, friends, and don't be swayed by dreams being sold कि आप बहुत पैसा बना सकते हो in a small duration. अगर आप ये जाल में फंसोगे, आपके पैसे जाएंगे. $1 million tip that I can give you guys, that you guys will be able to earn a lot of money. Identify companies whose products you use on a day-to-day basis आपके घर में. Find if they are listed and buy them. Like company, घर में अपन पेंट यूज करते तो एशियन पेंट्स नाम की कंपनी है, उसमें लगाओ. Over a period of time, they will create wealth. अपन कपड़े लेते हैं, अंडरगारमेंट्स लेते हैं, जॉकी, ये क्या है, पेज इंडस्ट्रीज नाम की कंपनीज है. They will. बाइक लेते हो, बजाज ऑटो, उनकी बाइक्स लेते हैं. So on and so forth. Remember, the stock market is a discounting machine. It will reward a stock for its future results and not existing. It will always run 6 months in advance. आगे क्या होने वाला है उसके बेसिस पे आज लोग बिड करते हैं. Start early, do your research and invest only that amount that you can afford to lose. इतना भी मत लगाओ कि आपकी अगर स्टॉक मार्केट गिर गया, जैसे अभी गिरा था 60-70%, आपकी नींद उड़ जाएगी. Don't do that. In the initial years, don't chase to make big money via instruments like derivatives. Start small, start investing, learn the traits of the game, and then if you want to venture out. And that's all, friends. I will now take a quick question and answers. All the very best. I hope I've been able to describe what the stock markets are from a very basic angle. I'm open to take up questions.